Is it so that it is the only Supreme Court which can make rules under Article 199? High Court and Federal Shariat Court, they are having the same powers? Sir, 202 of the Constitution gives the power to make rules to the High Court, sir. And is there any law made for those two courts? उनके अपना procedural laws हैं High Court में, and that judgment of a single bench judgment was cited by Mr. Bhandari on the last date, early 2021 Lahore, which deals with what is the meaning that rules can be made, but they have to be read with Entry 55 does not apply to them, because that's why the rules of law reforms ordinance की बात की थी. Parliament has put a clog on the Supreme Court. Why not on High Court and the Federal Shariat Court? The High Court में है What are those 202 special reasons to constitute this act? Sir, 202 kindly be seen. Subject to constitution and law, a High Court may make rules regulating the practice and procedure of court or of any court subordinate to it. So 202 is 203J is the Federal Shariat Court. जी, 203J. नहीं, आप माय लॉर्ड का सवाल नहीं समझे. आपका पहले वाले सवाल का जवाब ये था क्योंकि रूल्स बन गए हैं तो अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज बीन रेंडर्ड इफेक्टिवली मीनिंगलेस. माय लॉर्ड का सवाल ये है, अगर आपकी ये बात सही है तो सुप्रीम हाई कोर्ट के कौन से रूल्स और फेडरल शरीयत कोर्ट के कौन से रूल्स बन गए थे, तो ये फिर इसका जवाब क्या होगा? ये मैं इसका जवाब आपने नहीं दिया. सर, पहले मैं आपकी बात का वो जवाब देता हूं. मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं फिर आपको माय लॉर्ड का सवाल बता रहा हूं. आपने कहा कि अब नहीं, मैं अभी भी कहता हूं, आज आप रूल्स बनाने जाएं, they cannot be in violation of the constitution. Subject, they have to be subject to any substantive law. I can only use one word for it, profound. जी, बट स्टिल आपने ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि जी अब नहीं हो सकता. माय लॉर्ड, रूल मेकिंग पावर इज अ कंटिन्यूअस पावर. समझ गए ना, मगर माय लॉर्ड का जवाब नहीं दिया आपने. जी, मैं दे रहा हूं उस पे सर. इसके अंदर भी जो लॉ उन्होंने बनाया है, that has to be subject to constitution and the law, and that is the interpretation given in the judgment of. इसके लिए तो कोई legislation the Lahore High Court in a full bench judgment, जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि गवर्नमेंट ने भी लेजिस्लेशन कर दी थी और हाई कोर्ट ने रूल्स भी बना दिए थे, द हाई कोर्ट सेड यू कैन नॉट डू दैट. वंस द पावर वेस्ट्स इन द हाई कोर्ट, the government or the legislature cannot legislate in matters relating to rules, because the rule making power exclusively vests in the High Court. जी. So this is, अगर इस judgment जिस पे आई PLD 2021 Lahore page 544 and relevant portion is para 61 page 580 onwards, sir. पढ़िए. PLD दोबारा साइटेशन बताइए. PLD 2021 Lahore page 544. Follow para 61. आपकी बुक में कौन सा हिस्सा है? Page 580, page 561. की बुकलेट में कौन सा है? जी, बुकलेट में नहीं है सर. मेरे नोट्स भी हैं, मैंने अपनी सीएमए भी दाखिल की हुई है, पर क्योंकि माय लॉर्ड ने पूछा तो इसलिए मैं निकाल के लाया हूं उनसे. पैरा 61 और बात 202 पहले कोट करते हैं और फिर मैं आई रीड दिस पैराग्राफ सर. ये पेज 544 आप 580 सर. It starts at page 544 and relevant portion which my lord's observation is at page 580. सिंगल बेंच का जजमेंट है जी. Why you are citing it before full bench? तो इसमें इंटरप्रेट हुआ है हाई कोर्ट की पावर्स के ऊपर जो 202 की पावर्स हैं. होगी जी. सिंगल बेंच का जजमेंट फुल कोर्ट को पड़ता है क्यों नहीं पड़ता? इसमें एक लॉ बना दिया था, अमेंडमेंट लॉ, और रूल्स में अमेंडमेंट कर दी थी. दैट वाज चैलेंज एंड दैट वाज सेट असाइड. काइंडली मे आई रीड लॉर्डशिप काइंड परमिशन. Want to? जी. Thus the High Court have been conferred the constitutional power regarding rules and procedure, which may not only regulate the practice and procedure of a High Court, but also any court subordinate to it. In exercise of this power, HC has made rules entitled High Court Rules and Orders, which contains elaborate procedure to be followed by the court subordinate to it in matters relating to adjudication of cases before civil court. Thus, not only has the High Court been delegated the power of making and amending rules in the first schedule by the court itself, but also by the Constitution by virtue of Article 202. The central question regarding power of High Court has escaped the attention of Government of Punjab while promulgating the amendment ordinance, which impinges upon the powers of the Lahore High Court to enact and amend the rules. This proposition being stated for a simple reason that the amendments to by amendment ordinance are made part of the substantive body of the court, not in the rules comprised in the first schedule, and almost all of them relate to details of procedure
to be followed by civil courts in adjudication of cases which, as numbered, has traditionally been part of the first schedule. A grossly egregious and anomalous situation has now been created which pits the procedure introduced by amendment against the amendments made by Lahore High Court, which now run a parallel course. There are serious contradictions between the two processes, which is most cases are irreconciled. Although, I'm reading from the last line, although in such matters considered as is not normally a sign off, but in peculiar circumstances where across the board amendments the rules have been made by committee of the High Court only a few months, Government of Punjab is obligated to have consulted LC for purpose of reconciliation. Also, while a reference to Article 202 of the Constitution has already been made, it also by implication follows that exercise of rule-making powers is constitutional, which resides in the High Court. Therefore, if such power has already been exercised, emerges as an unwritten rule to be followed in all such matters that is of utmost importance concern be held and the government of province. It is not only essential but also to preserve the independence of that is unique situation where judicial legislation is present. So this is thing once the constitutional power has been exercised by the court, because these rules made by this court have constitutional backing. This is what the judgments have said. It has constitutional backing. Even the rules under the Supreme Judicial Council, PLD 2021 Supreme Court page 1, page 94 says that though Supreme Judicial Council does not, the law does not allows them to make rules, but they make the rules, Supreme Judicial Council, and those rules have constitutional status. So take a look at Article 203E in Yes. relation to the Federal Sharia Court. Ji. Take a look at Clause 2. 203 capital E, Clause 2. My Lord. Yes, my Lord. The court shall have power to conduct its proceeding and regulates its procedure in all respect as it deems fit. This doesn't seem to be regulated by law. No, it doesn't, sir. So therefore, does this mean that the rule-making power of the Federal Sharia Court is on a higher pedestal as compared to the Supreme Court or the High Court? No, my humble submission, Agreed. both are constitutional powers, sir. So- both the Supreme Court, the High Court have been granted. I'm just coming off from what my learned colleague was asking you about the rule-making power of Federal Sharia Court. If read literally, this would mean that the Federal Sharia Court is put on a pedestal much higher than even the Supreme Court, to which appeals lie from the Federal Sharia Court. So then there are judgments of this honorable court that when if there's a conflict between a substantive provision and has to be- provision of the Federal Sharia Court, then those substantive provisions will prevail, sir. Thank So that is also a judgment of this honorable court on this field. That constitutional provision will be a higher pedestal than the provisions under the Federal Sharia Court chapter, sir. Thank you. Ji, my lord. So, my lord, humble submission is that I was coming to that the jurisdiction aspect, sir. Jurisdiction aspect is that yes, Article 175 gives the Parliament the jurisdiction to make law, but that law has to be read with Article 142A, which I read to your lordship, sir, and entry 55, sir. Does 191 confer jurisdiction or does it confer power? I'd say it confers power, sir. Because it says regulated, the most important word is that the rule make it regulate the procedure, practice and procedure. What is the meaning of regulate? 91 is not a jurisdiction conferring article, It is conferring power. conferring Ji, article. ji. And there is a distinction between jurisdiction and, And power. And that has been very elaborately dealt with by this Honorable Court in Ziaur Rahman's case, sir. PLD 1973 Supreme Court, page 49, and the relevant question is, okay, what is the difference between judicial power and jurisdiction, sir? PLD 73? 3 Supreme Court, page 49, sir. And I'll give you lordship the citation. तुमने बनाया हुआ तो है? दो
रेलिवेंट पेज कौन सा ऑफिसर? सर सॉरी मेरी किताब जरा नहीं मिल रही, लेकिन 73 सुप्रीम कोर्ट पेज 49 विद अ ब्रेक डिले बट जस्ट मिस्टर पढ़ लेंगे बाद में, अगर आपको नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. My lord, and the relevant portion, my lord, will find at page 69, sir. It refers to, from 68, the case of Fazlul Qadir Chaudhary, sir. First paragraph. Para 69, sir. And it says this, the whole page. Para 69? Page 69, my lord. जी. जी. कहाँ से पढ़ें? जी. कौन सा पैराग्राफ? जी, para D, जहाँ parenthesis D, paragraph से, what the Honorable Supreme Court was saying regarding. So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its power and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which has taken oath to protect and preserve. But it does not claim that, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is a provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This is the right which it acquires, not dehost the Constitution by virtue of the fact that it is a superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court and can only be taken away by abolishing the court itself. In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign powers, then ex necessity derive from the very nature of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power has been defined in corpus juris secundum. The judiciary or judicial department is an independent and equal coordinate branch of government, and is that branch thereof which is intended to interpret, construe and apply the law, or the department of government which is charged with the declaration of what the law is, and its construction so far as it is written law. This power, it is said, is inherent in the judiciary by reason of the system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive execute and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is in relation to something already done or happened is the function of judiciary, while the predetermination of what the law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be then asked at this stage as to what is meant by jurisdiction. How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs of the Constitution, may well provide for a great many things, such as the subjects in respect to which that power may be exercised and the manner of the exercise of that power. Thus, it may provide that the courts set up will exercise revisional or appellate powers, or only act as a court of secession, or only decide constitutional issues. It may demarcate the territories in which a particular court shall function, over which its writs shall run. It may specify the person in respect of whom the judicial power to hear and determine will be exercisable. These are all the matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of the particular rest or subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of its exercise. Jurisdiction has therefore right to adjudicate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. In exercising this power, judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of the public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested it with the power to declare what the law is in the cases which come before it. It thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is a duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. This is no doubt a delicate task, as pointed out in the case of Fazlul Qadir Chaudhary versus Shah Nawaz, which has to be performed with great circumspection, but it has nevertheless to be performed as sacred constitutional duty when other state functions disregard the limitation imposed upon them or claim to exercise power which the people have been careful to withhold from them, sir. So this is the difference between jurisdiction and judicial power. The power exercised under 191 is a constitutional power vesting in this court to regulate
the practice and procedure of the court. And Parliament cannot interfere in that because that's exclusively given. If it was, then it would have said until the Parliament makes the law, the Supreme Court can make the rules of procedure, etc. These kind of words were not used. Where the Constitution specifically uses these words, then the law is being given. But it says subject to, that is implying there's not an enabling provision, it's a restrictive provision. This is my humble submission. As my Lord, anything else? Mr. Zubairi, the similar principle was reiterated in Sharaf Afridi's case. That was regarding independence of judiciary, and that was separation of judiciary, PLD 94, Supreme Court, page 105. Added note by Salim Akhtar. Ji, sir. Ji. And it was coming from a larger bench of the Sindh High Court, 89 Karachi, page 404. That judgment was upheld, authored by my Lord Ajmal Miazi then was, sir. My Lord, I think if you argue in context of Pakistan and what's happening and why presumably the legislator enacted this law. I understand, sir. No, you're not. Now let me pose a certain queries to you. This, they are giving a right of appeal. Now we're talking about the right of appeal under 184(3). My Lord. Correct? Yes, my Lord. अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है. ठीक सर. ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत हो रहा है. कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप हमारे सामने पिटिशन नहीं लाए. मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से. सर वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे. सर अदर सवाल अभी तक आया नहीं है. 184(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है. ह्यूमन राइट्स सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है बताइए, है किसी कानून में उसका तस्करा है बताइए, है. अभी तो हम चले पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है. अब 184(3) जहां तक हेबस कॉर्पस की बात है उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत, उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया. और अगर आप कहते हैं कि रूल की भी जरूरत नहीं उधर, अब तो हम रूल से भी चले गए ना. 191 ये तो नहीं देता है इजाजत के चीफ जस्टिस बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट सेल बना सकता है, या तो क्या ये है. तो वहां तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं. उसमें चले यहां तक बात मान लेते कि अगर 184(3) में ह्यूमन राइट सेल बन गई होती, फिर आपकी बात में वजन होता कि भाई ठीक है 184(3) में ह्यूमन राइट सेल बन गई है तो उसके तहत कर लिया है, सही क्या गलत किया तो बात की बात है. तो वो बातों को तो आप बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहते हैं कि 184(3) में. अब देखिए, इससे पहले कि दुनिया हम पे उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूं कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, और हजारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस. ठीक है, पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे. अब आप कह रहे हैं चले खैर सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए. तो कम से कम वहां ज्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज करना चाह रहे हैं. यहाँ ये 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ, ये हकीकत है पाकिस्तान की. आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें. कैसे इख्तियार हुआ बता दें, ये आप बिल्कुल तरीकेकार सही था फिर बात सही है. अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आप उसकी रेमेडी, अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी जिम्मेदारी है. सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस अदालत की है, इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है. अगर हमने गलती की हमें दुरुस्त करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए. अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है या नहीं. आप बस सिर्फ उस बात पे खड़े हुए हैं, मगर जितनी वो जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको वो नजरअंदाज करें. तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों का कर ले, फिर वहां तो रूल्स बना लेते. एक ऑर्डर था मेरा कि भाई चलें रूल्स बना ले, फिर इसको हम कर लेते हैं. तो वहां तो आप जा ही नहीं रहे हैं. तो आपका जो कंडक्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं. नो सर, आप किसको कर रहे हैं? नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं जी. अरे तो आपने वजाहत नहीं की कि आप किसके लिए अपेयर हो रहे हैं. चले खैर ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़ क्या. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था सही हो रहा था, तो फिर बता दीजिए ना. अगर हम अगर हम इस कानून को
ختم کر دیتے ہیں, قلم قدم کر دیتے ہیں, تو کل میں اس کا استعمال ویسے ہی کرتا رہا ہوں جیسے پہلے ہو رہا تھا, وہ صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دے دیجیے گا. صاحب بالکل میں آپ سے متفق ہوں اس بات. میں نے کوئی یہ پوائنٹ آف ویو نہیں دیا, میں آپ کا موقف سمجھنا چاہ رہا ہوں. نہ کہیے کہ میرا موقف ہے یہ. سر آپ کا موقف ہم سن چکے ہیں کہ آپ نے, نہیں میرا موقف نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جی آپ اپنے پاورز گیو اپ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کہا. نہیں یہ وہ الگ بات ہے. یہ ابھی بات ہو رہی ہے 184(3) کی, پروسیجر والی بات الگ ہے, وہاں پاور کی بات. پہلے میں پوچھا بھی تو یہاں 184 پہ تو آیا ہی نہیں تھا. میں آپ 175 کی جو بات ہو رہی ہے تو میں تو پھر آپ سوال ہو گئے تو مجھے آنے تو دیں 184 پہ. اس پہ کب آئیں گے؟ 10:30 بج گئے سر. آپ 11:30 تک کہا تھا, لیکن اس سے پہلے میں انشاءاللہ ختم کر لوں گا. لیکن آپ کو نہیں 11:30 کہا تھا, سب کو کہا تھا. اچھا سر, میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں کہ 184(3) پہ تو بھی آیا نہیں تھا, لیکن بالکل آپ سے متفق ہوں اس بات سے کہ 184(3) کا غلط استعمال بھی ہوا ہے. اس پہ بہت چیزیں جس پہ بہت سوالات اٹھے, لیکن پوائنٹ از دیٹ بات میں جو آرگیو کر رہا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہ آپ ایک فلسفائی بات کر رہے ہیں. نہیں سر, حقیقت میں وہ نہیں ہے. پہلے مجھ سے پوچھا کہ صحیح استعمال ہوا غلط, تو اس کا جواب نہیں تو پھر اس کا حل بھی بتا دیں. حل آ رہا ہوں سر. پہلے میں آپ سے بات بتا رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, اس پہ حل کی طرف آ رہا ہوں. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ سر اس کا صحیح استعمال ہوا غلط استعمال ہوا, دیکھنا آپ کو یہ ہے کہ کمپیٹنس کس کی ہے اس کو صحیح کرنے کی, جورسڈکشن کس کی ہے. نہیں آپ دیکھیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اب اپنی ذمہ داری ایک دم ہم پہ ڈال. نہیں میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں, تو آپ نے کہا دیکھنا آپ کو آپ کی کوئی رائے ہے, آپ پاکستان کی سب سے بڑی باڈی ہیں وکیلوں کی, تو بتائیے نا اپنی رائے بتائیے. جی عابد زبیری صاحب. جی سر, اسی کانٹیکسٹ میں اگر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے ایگزسٹنگ, اس کے تحت سے 184(3) کو لے, اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے, اٹ ہیز دی ایفیکٹ آف وائلیٹنگ دا فنڈامنٹل رائٹس, کیا پارلیمنٹ جس کے پاس ویسے اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو انلارج بھی کر سکتی ہے اور سپلیمنٹل پاورز بھی کنفر کر سکتی ہے, کیا وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کانٹیکسٹ میں, ایکسیس ٹو جسٹس کے کانٹیکسٹ میں, از اٹ بیریفٹ آف جورسڈکشن؟ اگر سپریم کورٹ اپنے رولز کے تحت اس کا ایفیکٹ یہ ہو کہ فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, ایکسیس ٹو جسٹس بالکل صحیح سر. میں 184(3) کی بات نہیں کر رہا, آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا you had I think come on track. جی, and I had said this in the first hearing. It is not a question of good, bad, it is not competence, sir. It is the question of competence. Who is there to correct it, or who has to be here to make the law? A law may be a very good law, yes, but if somebody who is not competent to make it, Ji. it is in conflict with the constitutional powers, jadar trichotomy of powers hai. آپ ہمیں یہ کمپٹنس پہ بتائیے کہ کس کی کمپٹنس. وہ تو بات ہم سمجھ گئے, آپ کا موقف یہ ہے, وہ تو بات سمجھ گئے, مگر میرا سوال اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نظر انداز کر لیں صرف کمپٹنس پہ, تو وہ آپ بتا دیجیے اس پہ. تو ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی رائے. اپیل کے اوپر آ رہا ہوں, لیکن پہلے میں جج صاحب کا سوال دے دوں. اطہر من اللہ صاحب نے جو پوچھا, مائی لارڈ, my answer is that it's not a matter of good or bad or غلطی, it is a matter of competence, whether my lord has to see, this court has to see whether they had the competence to even correct that thing by making this law. Then you have not crossed the first hurdle. There's a presumption of constitutionality. جی, آپ نے ایک لا چیلنج کیا ہے, جی, اس کی ریپٹل کے لیے آپ نے نہ اسٹینڈنگ بتایا ہے, نہ 184(3) کے تحت سر میں ابھی تک یہ بتا سکتے ہیں آپ کون سا فنڈامنٹل رائٹ انفورس کر رہے ہیں. آپ اس مینٹینیبلٹی کو بھی نہیں کراس سر. میں ہم ایک ایبسٹریکٹ میں جی, وی آر سب 191 کے پہلے دیکھیں, میں نے سمپل ایک سوال یہ jurisdiction of this court is not just آپ سے سمپل میں نے ایک سوال پوچھا جی, ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ڈینائی ہو رہا ہو, یہ سپریم کورٹ ڈینائی کر رہی ہو جی, فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کر رہی ہو, کین دا پارلیمنٹ ناٹ legislate? My humble submission, no, they cannot. If the court is violating any of the rules of the Constitution, then case should be brought before the Honorable Supreme Court to challenge that thing. That is the way to challenge the law. Any rule made by the Supreme Court, Parliament cannot make. میرے سوال کا بھی تھوڑا جواب دے. مجھے یہ بتائیے عابد صاحب جی, the Chief Justice exercised his powers before this law by fixing these petitions. Why not more important petitions like enforced disappearances, other human rights issues?
Now, that is a question which the Parliament wanted to address. Why should these cases have been taken first? Why not other most important cases? My humble submission is practice and procedure, only the power to regulate the practice and procedure rule-making power vests in the court. It does not vest in the Parliament to make the practice and procedure, even if there was something. ये बात आप कह चुके हैं, नई बात कर देना, सवाल जवाब देना. And the law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional provision. That is the jurisdiction of this honourable court, not just the violation of the fundamental right, but if the law itself is in violation of some constitutional provision, that can be struck down by this court. So that is the jurisdiction of this court. That is under अब आप बताएंगे मेरे सवाल, अब आप आबिद साहब, मेरे बात की High Court has also jurisdiction on 199. तो मैं लिखूं, मैं अपना लिख देता हूं. It was put to him and he is not answering Sir, it. I'm coming, but my lords, आप पहले वन बाय वन कर दीजिए. अच्छा, बहुत बेहतर सर. जी. अच्छा, 184(3) पढ़ें सर पहले प्लीज. नहीं, मुझे मैंने जो बात की वो पढ़ तो 100 दफा लिया है. मैंने जो आपको बातें बताई उसका सर, जवाब, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जी अपील का हमारी स्टैंड भी है कि अपील का राइट होना चाहिए, बट इट हैज टू बी गिवन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन. मैं ये बात नहीं की थी. मैंने कहा जितना इस्तेमाल हुआ सब सही हुआ. मैंने जवाब भी आपने कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं कहता हूँ नहीं, अगर नहीं भी हुआ है सही, अगर पूछ रहा हूँ, आपकी कोई राय नहीं है. प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, सही भी हुआ है, गलत भी हुआ है, नहीं, भी अपील होनी चाहिए. मैं कहता हूँ आप ये मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में, इन योर पर्सनल ओपिनियन, अगर मगर ना करें, सीधी बात करें ना, आप क्या हुआ है, सारे सही हुआ है. मैं कह रहा हूँ कि दोनों अच्छा भी हुआ है, गलत भी हुआ है. जी, मेरा ये स्टैंड है. और ये मैं आपसे आपके सवाल का जवाब. ठीक है. अच्छा, अब आप दूसरा सवाल सुन लीजिए. जी, आपका ये कहना है कि तरीकेकार गलत है, यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना? ये राइट देना चाहिए मगर आइन को तरमीम लाने की, ये आपका मौक़िफ़ है. जी. अच्छा, अब सुनिए, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ना हम बढ़ा सकते हैं और ना पार्लियामान बढ़ा सकती है. हम ये केस सुन कैसे रहे हैं फिर? जी, हम 184(3) में सुन रहे हैं ना ये केस. जी. हमने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी जी. या क्या ये नहीं बढ़ाई? जुरिस्डिक्शन कर्टेल्ड है 184(3) में. दो बातें, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. अब कौन सी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं? आप कह रहे हैं यहां बढ़ा दीजिए मगर वहां ना बढ़ाइए, तो यहां ये हम केस सुनने से ही अपनी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं. नहीं सर, आपने ये आपका मौक़िफ़ होगा. आपकी सारी जजमेंट्स जो है 184(3) मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे रहा हूं. जजमेंट करना सवाल है. 184(3) के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी सुप्रीम कोर्ट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और अगर कोई कानून मुकन्ना बनाती है तो उसके ऊपर डिक्लेयर करना कि वो कानून आइन के मुतसादिम है, वो भी आपका हक है अंडर 184(3). अच्छा, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जब भी कोई अमेंडमेंट आ जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत हो सकता है. आपका कहना ये? तो बिल्कुल हो सकता है. इफ माय लॉर्ड, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया. बिल्कुल करें सर. इवन इफ इट्स नो फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्व. नहीं, फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन मैटर में फंडामेंटल राइट होती है. कोई अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकती है, वहां भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू आता है सर. व्हाट इज द मैटर? देखिए, दो कंडीशंस होती है ना सर, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स. इट्स नॉट आइदर और, इट इज बोथ साइमल्टेनियसली. वही मैं कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों को देखना होगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखना होगा. तो ये केस में क्या फंडामेंटल राइट है बताइए ना हमें. इसमें फंडामेंटल राइट एक्सेस टू जस्टिस का माय लॉर्ड वाज सेइंग, कौन सा आर्टिकल बता दें, वो वाला आर्टिकल राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी, होल्ड नहीं किया गया, उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आता है, तो मैं लिख लूं. जी, access to justice and independence of judiciary is being held to be incorporated in the words of Article 9. तो आप कह रहे हैं लिटरल रीडिंग में तो नहीं है, इंटरप्रिटेशन. अच्छा, लिटरल में नहीं है ना, तो ये तस्लीम आप करते हैं. लिटरल में नहीं है, इम्प्लाइड रीडिंग में है. नहीं, जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल व्हिच इज बाइंडिंग ऑन अस इज सेज के जी एक्सेस टू जस्टिस इन हाई कोर्ट. बाइंडिंग, इट मे बी बाइंडिंग ऑन यू, नॉट ऑन अस. सर, स्टिल हाई कोर्ट बार का जो फैसला है 2009 सुप्रीम कोर्ट 879, इट इज अ फुल कोर्ट फैसला, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 9 की वायलेशन में एक्सेस टू जस्टिस इंडिपेंडेंस. चलिए ठीक है, मेरा सवाल का जवाब मिल गया. आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़े. हाँ, मेरे साहब ये बता दें कि आप करेंगे एक्सेस टू जस्टिस की बात है, सिटीजन एट लार्ज की बात है, इस एक्ट के तहत वो कौन सी कोई ऐसी प्रोविजन इस एक्ट में है जो पब्लिक को डिबार करती है टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? ऐसे कोई प्रोविजन कह सके कि इसमें जो बात है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. इफ दिस लॉ, इसमें अच्छा लॉ होगा, बहुत अच्छा लॉ होगा, लेकिन इशू ये है कि इट इज द कॉम्पिटेंस. अगर कॉम्पिटेंस नहीं थी देन इट्स नॉट अ राइट लॉ, इट इज अल्ट्रा वायलेंस. मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ. इस एक्ट को देखने के लिए हमने ये देखना है कि आया इसकी कोई प्रोविजन या टोटल एक्ट किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है
या इसके जरिए कोई पब्लिक या किसी सिटीजन का हक मारा जा रहा है कि उसे पहले तो अपील की हक थी, अब नहीं दिया जा रहा है, पहले ट्रायल की हक थी, अब नहीं दिया जा रहा है, ऐसी कोई प्रोविजन इसमें है कि हम कह सके कि ये इलीगल? सर मैं कह रहा हूं इसकी प्रोविजन आपको ये देखनी है कि क्या ये कानून साजी हो सकती है। जवाब दें उसके बाद पहले। मैं आ रहा हूं सर, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें ये देखना होगा कि क्या कानून साजी का इख्तियार था पार्लियामेंट के पास टू मेक दिस लॉ। चलिए इसमें बताता, आपने पहले कहा कि 1980 में रूल्स बने जी, वो रूल एग्जिस्टिंग लॉ के तहत बने जी, ये तो आप मानते हैं कि रूल लॉ के तहत बनने चाहिए जी, तो क्या आप रूल बने 191 के तहत सर, 191 आर्टिकल रूल लॉ के तहत। आपने थोड़ी देर पहले जो आर्गुमेंट से आपने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज के मुताबिक 1980 में रूल जी बिल्कुल एग्जिस्टिंग आप प्लीज मुझे बता दें, मेरी नजर से तो नहीं गुजरे, 1980 में उस वक्त कोई ऐसा कानून था जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर को नहीं फॉलो कर रहा था? बिल्कुल नहीं तो था। ये रूल कैसे बने अंडर 191 56 के बने, पहले बने 1956 में। लॉ कहाँ गया सर? लॉ अगर कोई लॉ है, वर्ड यूज सब्जेक्ट टू लॉ। सब्जेक्ट टू लॉ मीन्स कि कोई लॉ अगर होता, कोई भी लॉ हो, इट कैन बी एनी लॉ, सब्सटेंटिव लॉ। आई थिंक वो 191 वाला आर्ग्यू आप कर चुके थे जब आप 175 के थे। लॉ कोई था जिसके वायलेशन में नहीं बन सकते थे, ये मेरे हम्बल सबमिशन थी। ठीक ठीक ठीक, ये लॉ प्रोसीजर पे लॉ नहीं। अगला पॉइंट बताएं। अगर कोई होता, If I may ask you a question. The equivalent to Article 184(3) of our Constitution, I think, is Article 32 of the Indian Constitution, जी मालूम, which guarantees the right to move the Supreme Court for violation of fundamental rights. If memory serves me right, Mr. Ambedkar, who is regarded as the father Ji. of the Indian Constitution, in relation to this jurisdiction conferred on the Supreme Court, said it is the very soul of the Constitution. जी Now, if that is correct, and in India no one has ever doubted that that is correct, we are here talking of the very soul of the Constitution. yes, and It seems to me that, and this is my question to you, that can a challenge to a law which, according to you, whether right or wrong, that has to yet to be decided, that is an assault on the independence of the judiciary. Is that not an assault on the very soul of the Constitution? of course, because Can it be therefore put to one side simply by saying that it is not in violation of fundamental rights? no, because This my is humble the- submission is that this is what my humble submission is, that the very purpose this law, and I read that judgments, that it affects the separation of powers, the doctrine of separation of powers. My lord, this court has the exclusive jurisdiction. चलिए ये point आप repeat करते रह रहे हैं। अगला point and that's बताइए। why if any law which is made in violation of that cannot be, that affects the Okay, let's fundamental get on- rights of the get people of on with it, Pakistan and Mr. access to Zaveri. justice. Next point जो पे आते हैं। 184 की जो power, that's the original power of this court. There's appellate power is 185, sir. Advisory power is 186. Review power is 188. These are the four powers which are given by the Constitution. No, you are wrong. The other parts also. I'm talking about these are appellate when की बात कर रहा हूँ, चार powers की जो दी हुई है. Now, the original framing में appeal का right नहीं था. Appeal is only provided under Article 185. Now, if you want to give an appeal, my humble submission is that you have to amend the Constitution. And why? Because article section आप पढ़ेंगे sir, Article 175, 142 देखा, अब entry 55 देख लें sir. What does entry 55? पढ़ें। जी. My lord, 175(2), Article हाँ, 142A and entry 55 have to be read together, not in पढ़ने 55 से कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? jurisdiction pass all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list, and to such, now I'm coming to emphasize this last part, sir, the second part of this entry. And to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Now these are very important words, and my lord, I'll keep that my lord's thing. And by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction Supreme Court and conferring thereon of supplemental powers, sir. The point is that the thing, पिछले जो आपके जो लिस्ट थी, उसके अंदर ये वर्ड्स नहीं थे. In the 56 Constitution, 62 and 72, expressly authorized by. पढ़ लिए, अब आप argument develop The argument is that when you read all these three provisions together, no court shall have jurisdiction except provided by Constitution or law. The 142, जो Parliament can make laws as regard for
यहाँ इंक्रीज की जो बात हो रही है उस पर मैं सिर्फ एक पैराग्राफ जजमेंट इसके पावर इंक्रीज हो रहे हैं ऑन द सुप्रीम कोर्ट की पावर, यहाँ आप इसमें आप कह रहे हैं ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी खत्म हो रही है क्योंकि पावर इंक्रीज हो रहे हैं। सर इट इज द मेथड, द मेथडोलॉजी, वो मेथड वाला आर्गुमेंट खत्म हो गया। नहीं सर, इसमें यही है अब आप दूसरा आर्गुमेंट दे रहे हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर अपील नहीं प्रोवाइडेड थी उन द ओरिजिनल फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डिड नॉट प्रोवाइड, ओनली द अपील वाज। अगर मैं फिर उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी दे सकता हूँ कि 184(3) का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया, नहीं देखिए आप, सॉरी टू से, इफ समबडी albeit person not even fully authorized is doing something to help the nation, help the Supreme Court, you should say strike down because they're not following some perceived letter of the Constitution. That will be a stretch. If this power had been given to the Federal Shariat Court, if it had been given to some secretary in the government or to the parliament even, then you could say yes, we ek appeal de di, in a fit of rage a judge says so and so political party I hereby ban it. खत्म, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका एक्सेप्ट रिव्यू, राइट? आप इन अ फिट ऑफ रेज, या आपकी बात किसी को पसंद नहीं आई या कुछ ऐसी बदमजगी हो गई, हो जाते हैं, इंसान दोनों तरफ होते हैं, तो हम यहाँ बन करके वो फरिश्ते नहीं बनते, हम इंसान ही रहते हैं। फिट ऑफ रेज में उन्होंने कर दिया ये, तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल होनी चाहिए राइट ऑफ अपील, बिल्कुल होनी चाहिए, इट्स ओनली द मेथड, बिल्कुल होनी चाहिए मेथड। आप मेथड विल नॉट, आप हमें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चल, इट्स लाइक अ पेशेंट डाइंग ऑन द, इट्स लाइक अ पेशेंट डाइंग ऑन, सुन लीजिए, पेशेंट डाइंग समवेयर, अ पर्सन रिसीव्ड अ गन शॉट वुंड, इज लाइंग समवेयर ऑन द स्ट्रीट, ठीक है? Now, someone is not a doctor, but knows a little bit of medicine. He does something, tries to press him thing. Ideally, it should be performed by the doctor. So he said, no, don't do it. Wait for the water to come. Wait for him to die. And he, of course, he's not a doctor. He may be a quack, or he may just have seen some television shows, and he may just be applying some first aid, medical trade, who's not a doctor at all, not even a nurse, to save the person. So, इसमें ये बात हमें बिल्कुल इसको नजरअंदाज कर दें। इसका आप फिर शुरू में तो आप लोगों ने अटैक कर दिया था इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे, तो मैं तो कह रहा हूँ इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट इज गुड। तो मैंने इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट को नहीं, इस साइड से लोगों ने किया है, उन्होंने कहा कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, हमें बता दें पर्सन स्पेसिफिक कैसे है। नॉट बी डिबेटेड हियर, आई नेवर सेड दैट, आई सेड कि दिस लॉ मे बी वन ऑफ द गुड लॉज, but the point is that the way it has been done is unconstitutional. That is my case before your lordship, my humble submission. और देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी, the question is where the Constitution has put up a scheme of separation of powers as to who can do what. There is a reason, there is a rationale, and there is a philosophy behind it which has been developed over centuries of jurisprudence. If we open the door, and this is a question of opening the door, if we open the door for the Parliament to interfere in every matter that the Supreme Court may or may not take up, then there is no end to it. There would be good legislation and there would be bad legislation. How do you differentiate? The differentiation is put in the Constitution by the framers. This is what you can do and this is what you cannot do. Yes. Whether you want to do something good, if the Constitution prohibits you to do it, and the Constitution does not totally prohibit you. It says if there is something which should be in the Constitution is not immune from being amended to do that good. Yes. But to confer this power on the Parliament and say whatever you do, even if it is beyond the Constitution, if it is good, it's good. That is not how constitutions work. Yes. एक सेकंड है ना, ये जो रैशनल जो है, हमारे रैशनल और रीजन और फिलॉसफी जो होती है, we tend to forget when there's trampling of boots. Then all these things, nice philosophies go out of the window. The only difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. Do you have 2/3 majority? It's the very same persons doing the lawmaking, the same parliamentarians who are making law. It's no difference. It's just a question of numbers. Suppose a political party comes to power on the pledge, they're going to provide 184(3). They win the election. They don't have the numbers for 2/3 majority. So they are helpless. Even though it was a pledge to the nation that we will go, the first thing we're going to do is do this. So at the end of the day, it's a numbers game.
But if it's a numbers game, then we should also realize the traumatic history of Pakistan. Irrespective of numbers, irrespective of the entire nation, one person comes and then Parliament is held at whatever it is held at, and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-effect rubber stamp, done illegally, endorsed by Parliament by amendment to the Constitution. That's all right. We forgo the history of... America में ये चीजें नहीं होती. When we are so particular about the full stops and the commas, then we should also say it has not yet happened in America. It may happen tomorrow. It has not yet happened in the UK other than Cromwell. So we should not forget, we should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. It's half a country today because of these acts. So let's not cripple the Parliament completely when they are doing good because they don't have the numbers, 2/3 majority. That's all the argument is left with. 2/3 से करने ठीक है. आपका एक वोट कम है, आप नहीं कर सकते हो. That's what it boils down to that. Sir, my lord, to defend, protect, and preserve the Constitution. If the Constitution or the people of Pakistan, if that is the thing, then फिर हम आपसे वही सवाल पूछेंगे कितने लोगों ने किया है इसको. Then Constitution gives a mechanism, a procedure. You can, my lord, with utmost respect, it is not a numbers game. It is a Constitution put. The framers said that if a constitutional amendment has to be made for the people of Pakistan, because they are representing where the independent judiciary will be fully secured, then you have the number games. It is the constitutional requirement. आप सिर्फ notice में, you were not agitated enough either to vote in to have filed your own petition. You have filed your own petition. No, or you were on notice. Notice, sir. So you were not agitated enough to have filed your own petition. Some people came and filed their own petition. So if you were so agitated, you should have done it the very first day yourself. The Supreme Court, it would have been very nice to see Supreme Court Bar Association. जो cases file के वो तो take up नहीं हो रहे जो Supreme Court bar वो क्यों नहीं हो रहे take up? क्योंकि आप ये केस को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं. ऐसी बात नहीं है सर. खत्म करें. बात जी. Election petition pending है. The Constitution says we the people. ये excuse me जरा हमें भी question करने का time दिया जाए. Give ourselves the following Constitution. जी. Now, the people of Pakistan have said, if we want to amend the Constitution, we would do it through our argument हो गया आगे बढ़ते हैं. 3/4 ठीक है समझ गए 3/4 का argument. चलें आगे बढ़ें. Mr. Zubairi, क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? जी पूछिए जैसे. My lord. जी, the Act says that subject to Constitution and law, they have amended, they either taken the power of the Supreme Court by making rules. So what article of the Constitution they have referred to and which law they have referred to? They have referred Amendment has been made. We are opening the doors in future for amending the Constitution. My humble submission is Article 175(2) has been read in isolation to amend this law. Basically, an amendment has been done in the Constitution by amended by 175(2). And my humble submission is 175(2) cannot be read in isolation. It has to be read with Article 142A and Anti-55. अगला point बताइए. Mr. Zubairi, if I may, Mr. Zubairi, if I may ask you and follow up on what my learned colleague has said, that when Constitution is being amended, it is constituent power that is being exercised. It is a unique power, quite separate and different from the other legislative competence that is available to Parliament. So I think what my learned colleague is saying is, if we open this door of an indirect amendment to the Constitution, we are allowing constituent power, which is not a numbers game, if I may say so with all due respect. It is a numbers game because it is constituent power. We are allowing constituent power to flow into a channel which the Constitution prohibits directly or indirectly. So therefore, I think the point that my learned colleague has made, that this is at most or at worst perhaps
an indirect amendment of the Constitution, which is perhaps barred by the Constitution Sir, itself. tomorrow if this law नहीं tomorrow नहीं अभी हम यही देखते हैं। if this नहीं law is अब ये बिल्कुल for हम नहीं example, करेंगे। then the Parliament can No, also no, decide no, that the no, last no, the junior most no, judges will no, no. जी. Yeah, you cannot, we have a particular case, argue that. What happens tomorrow, I am not one who gives judgments on the basis of conjectures and surmises. इस पे कर लें, आप बहस खत्म कर लिया, आप वही पॉइंट बार बार दोहरा रहे हैं। जरा जल्दी खत्म कर लेना, आपका वक्त निकल जाएगा You दूसरों are का। representing the Supreme Court Bar Association. You are not petitioner nor respondent. क्या आप ये बेहतर नहीं था कि आप आके कहते हैं कि जनाब इस एक्ट को पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने 184(3) के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें उसमें सिंपल बात यह है, फिर से अगर आप पढ़ लें, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, द सुप्रीम कोर्ट शैल, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred by chapter 1 of part 2 is involved. हमने जो ऑर्डर्स किए, हम तो लोगों को सजा भी देते हैं, हम लोगों को बरी भी करते हैं, हम चीनी की कीमत भी मालूम करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। क्या ये अगर हम अपने इस डोमेन में रहें तो किसी लॉ या रूल की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि जी ये आप पावर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलतियां की होंगी, लेकिन पार्लियामेंट उसे सही नहीं कर सकती इस लॉ के थ्रू। दैट इज माई केस। अगर आप करेंगे तो आप खुद करेंगे सर, ये अपने रूल्स में अमेंड करके सर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर नहीं, आप अपने रेगुलेट करेंगे अपने रूल्स और प्रोसीजर को। गलती अगर आप कहें तो आप उसको करेक्ट करें, आप उसमें रूल्स अमेंड, अपने रूल्स अमेंड करें, उसमें आप अच्छा चलिए, आप इस बार यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। अगर हम किसी और को मौका देते हैं, यू जस्ट रिपीट। नहीं, यू वांट टू कैन इफ यू रिपीटिंग योरसेल्फ विल आस्क हियर समवन एल्स। 184(3) is original jurisdiction जी. conferred by the Constitution. जी, And it is the original jurisdiction, and if appeal is given, that would continuation of the proceeding before the original court. yes. This is settled You law. have a super It is settled Supreme law. Court. जी, Any provision of the Constitution where appeal is given by a simple legislative power by the Parliament, that is permissible under the law. no, my lord, under the Constitution it is not, sir. That's my. And may I just quickly take a lordship? Saab, how would you explain enlargement of jurisdiction? Yes, I'm coming to that. And for conferring supplemental Yes, my lord. powers. जी जी Because you see, they have to be interpreted liberally जी, as already laid down by this court. नंबर केसेस सर। माय लॉर्ड हम्बल से एक बस एक आप करके फिर खत्म या करूंगा डायरेक्टली उस पे आ जाए ना जी। if the सर parliament मैं is कह रहा हूँ कि जी competent to पार्लियामेंट enlarge the jurisdiction enlarge and also to confer any supplemental yes power. my humble submission अपील जो पार्लियामेंट ने दे दी इसके अंदर, तो कल किसी चीज को भी अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं। आप देखें ना, आप पहले इसको तो जरा रूल kindly 50 explain कर दीजिएगा। अगर तो जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड कर सकती है पार्लियामेंट, तो फिर उनका इख्तियार है। नहीं सर, with utmost respect, sir. How do you read? जी, this? I'm reading. I'll take help from a judgment of this court, 2000 SCMR, page 567, and the relevant portion is at page 617, sir. And just read this paragraph to answer your lordships and my lords. 2000 SCMR, page 567, Province of Punjab versus National Industrial Cooperative Credit Corporation. इसमें through provincial law, appeal was provided to the Supreme Court. That was struck down. Though a judge or cooperative judge was a judge of the Honorable Supreme Court, that was said that is fine. But when the appeal was granted, it was struck down. And this is what the Honorable Supreme Court had said. My Lord, kindly see page 617, para 17. Page 6. 617, my Lord. Starts at 567 and page 617. And the appeal के बाद may I just read? We lost a page. Coming now to the present Constitution of 1973. It may be of the para 17, sir. It may be observed that according to the Learned Council for the Government of Punjab, in view of Article 175(2) of the Constitution, under which jurisdiction can be conferred on any court, including the Supreme Court, by or under any law,
In relation to matters in respect of which provincial legislatures have power to make laws, including cooperative societies, additional supplemental jurisdiction or powers can be conferred on the Supreme Court by provincial